हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारा ये RBS चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि वीडियोस के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हमारे इन वीडियोस को अपने सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, हम उन्हें फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करें। We have studied the electric field due to a charge. कोई भी सिंगल चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, एंड द पोटेंशियल ऑफ इज यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज. Now we have to study the electric dipole. Now let us see what is dipole. Electric dipole, हमें पता है कि if we study a molecule or a atom, the positive charge and the negative charge, positive and negative charges, the center is at the same place. The center of positive and negative charges coincide, and therefore the net charge is zero, as well as there is no electric field outside this atom or molecule, because the center of both the charges is same, and the charges are equal. But if the center of positive and negative charges are not same, the positive charge and negative charge, the distribution of these two charges have the different center. For example, this becomes like this. The center of the negative charges is here, and that of the positive charges, the center is here. The center of positive and negative charges is not same. The center is displaced. They do not coincide. Then two poles are created. One pole that is center of one type of charge, and one type of center of one type of charge. These are called pole. Because these poles are two in a number, and therefore this system is called dipole. The system of two equal and opposite charges. This is positive and this is negative. Charges are equal because the equal charges have been displaced. ये टेढ़ा हो गया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एक तरफ ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस तरफ ज़्यादा हो गया. जहाँ निगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा हो गया वो निगेटिव चार्ज का पोल हो गया. जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा महसूस होने लगा, प्रतीत होने लगा, एक्सपीरियंस होने लगा, दैट बिकम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो दीज टू पोल्स आर डिफरेंट, वन इज हियर एंड वन इज हियर. तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इनके बीच की दूरी बहुत बड़ी नहीं, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. माइक्रोमीटर्स आर many more than micrometer, nanometers. In very small distance, it is called dipole. There are a number of molecules which are like this. For example, molecules of ammonia, molecule of NH3, alcohol, H2O, carbon dioxide. These molecules are dipoles. The positive and negative charges have their own centers, therefore they are dipole. To study the dipoles, we show the dipole like this. This is dipole. Though dipoles are very small, but to study
We draw them like this. This is positive charge and this is negative charge. These are two charges equal and opposite. This is center of this dipole. The length of the dipole is between the two. This is equal to 2a or 2l. The length of the dipole is 2l. And therefore, there is a physical quantity V which write dipole moment. Dipole moment is a quantity, vector quantity equal to the product of the length of the dipole and either of the charge. Either of the charge and length of the dipole. This is dipole moment P, this is vector quantity. The direction of this is from negative to positive direction. This is direction. This is Coulomb meter, the unit of this dipole moment. Dipole moment is a physical quantity is used to measure the strength of this dipole. This represents the strength of the dipole. This measures the strength of the dipole. The dipole moment is a measure of strength of dipole. जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उस डायपोल की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी. Now we have to find out the electric field due to the dipole. We have studied the electric field due to one charge, point charge, but here are 2 point charges. And therefore, due to these 2 charges, we have to find out the electric intensity, electric field on the axis of the dipole and on the equatorial point of the dipole. And any other point. Now let us find the electric field. Electric field at the axial point of a dipole. This is dipole. This is minus Q. This is plus Q. These are the 2 dipoles. This is the center. Here to here, this is A, and here to here, this is L, and this is L. And the axis of the dipole, there is a point P, where we have to find out the intensity, the electric intensity, the electric field. The distance from the center is R, and for the distance from this pole is R minus L. This is L, this is R, and there is R minus L, and from here it is R plus L. The electric field due to plus Q at P is E1.
1/4 epsilon 0 charge upon the square of the distance E1 1/4 epsilon 0 q upon r minus l square. Distance is r minus l, and this is in this direction. This is direction of E1. Similarly, electric field due to minus q is E2 1/4 epsilon 0 q upon r plus l स्क्वायर. यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा. दिस इज ए नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, but here negative charge is not placed because this is a vector quantity. In vector quantity we are related with the direction. Plus and minus are used where we calculate algebraically. Here we do not use algebra, here we use vector. तो वेक्टर के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू नहीं रखा. माइनस क्यू रखा नहीं क्योंकि वैल्यू उसकी हमको निकालनी और फिर डायरेक्शन निकालना. दिस इज माइनस एंड देयरफॉर ड्यू टू द माइनस चार्ज द इंटेंसिटी और फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. दिस इज डायरेक्शन ऑफ E2. It's clear that E1 and E2 both are opposite and E1 is greater than E2. Therefore, the resultant is E1 minus E2. Hence, resultant field E is equal to E1 minus E2 q upon 4 pi epsilon 0 कॉमन है दोनों में. 1/r minus l whole square 1/r plus l whole square. Now solve this. इसको सॉल्व करेंगे. पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे. Therefore, E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r plus l का होल स्क्वायर r माइनस l का होल स्क्वायर. ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस r माइनस l r प्लस l बराबर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0. यह है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ कर रखेंगे, एक में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा r प्लस l इन वन ब्रैकेट r प्लस l plus r minus l and in another bracket r plus l माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 इस इक्वल टू r प्लस l r माइनस l सेल कट गया तो यहाँ आ गया 2r और यहाँ r से r कट गया तो आ गया 2l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर.
2LQ is equal to P. This quantity 2LQ is equal to P. 2LQ is equal to P. Dipole moment. Therefore, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. 2LQ is equal to P and 2R. Or since the length of the dipole is very small with respect to the distance of the point where intensity is obtained, जहां हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं with respect to this R, the length is very small and therefore L square is neglected. So this becomes R to the power 4. Since R is very, very large than L, therefore L neglected. R से R कट गया and therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 to P upon R to the power 3 volt per meter. This is the intensity on the axis here or here at any point. Axial point पर ये intensity है 2P upon R cube. Due to one point charge, the intensity comes out to be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square, but here it is R cube. Here intensity is proportional to 1 by R cube. Here intensity is proportional to 1 by R square. यहाँ पर स्क्वायर पर डिपेंड करता है और यहाँ पर ये तीसरी घात पर, थर्ड पावर पर निर्भर करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. ये दिस इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q and this is due to a dipole. Now let us find the intensity on its equatorial axis. Electric field at this is dipole. Suppose dipole is AB. This is A and this is B. This is equator.
we have to find out at this point. This is P. We have to find out the electric field at P. This distance from its center, from here, O, this is R, and therefore this distance is equal to under root, this is L, R square, L square, and this is R square plus L square. The distances are equal, charges are equal. Therefore, the intensity due to this minus Q and the plus Q. The magnitude of the magnetic field is equal because the charges are equal, the distance is equal. तो अगर इनके मैग्नीट्यूड रखें तो दोनों आपस में बराबर होंगे. The magnitude of electric field due to plus Q is E1 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square plus L square. The magnitude of electric field due to plus Q is E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square plus L square, and it is equal to, this is equal to magnitude electric field due to minus Q, that is E2. ये भी वही है 1/4 पाई epsilon 0 Q upon R square plus L square. E1 and E2 both are equal. Here you see the E1, this is E2, this is E2, and this is E1. This is E1. E1 and E2 are equal. Therefore, the resultant of E1 and E2 will bisect this angle. This is E. The E1, since E1 is equal to E2, therefore E bisect the angle between E1 and E2. E1 और E2 के बीच की इस कोण को बाइसेक्ट करेंगे. This whole angle is equal to this and this. This side is equal to this side, and therefore this angle is theta and this angle is theta. Or theta plus theta is equal to 2 theta, and therefore this is theta and this is theta. External angle is equal to the sum of the two internal angles. दोनों का सम इन दोनों के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके दोनों पार्ट बराबर थे, 20 के बराबर होंगे. It means is parallel to the axis AB. E is parallel to axis AB, but in opposite side, because the P is in this direction. Now let us find the resultant.
the vertical component of E1 is equal to vertical component of E2 minus the vertical component of E1 is equal to E1 is in this direction. This is vertical component is E1 sine theta. Upward. Vertical component of E2 sin थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जरा आ जाएगा, यह हो जाएगा E2 sin थीटा, यह हुआ E1 sin थीटा, बोथ आर इक्वल यानी अपोजिट, चूंकि E1 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस E2 sin थीटा, hence vanishes. ये दोनों आपस में बराबर है, E1 sin थीटा इसको टू माइनस E2 sin थीटा, इसलिए इनका जो ये वैनिश हो जाते हैं. Therefore resultant इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये ऊपर वाला नीचे वाले दोनों बराबर और विपरीत हैं तो ये वैनिश हो गए. तो हमारा ये बचा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी E2 cos थीटा, और E1 और E2 बोथ आर इक्वल. द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा 2E1 cos theta is equal to 2E1 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square plus L square. Cos theta, from here we see that cos theta is equal to L upon this, that is L upon under root R square plus L square. This is equal to 1/4 pi epsilon 0 2 LQ upon R square plus L square. One power is here, half power is here, 3/2. 2LQ is P. Therefore, E is equal to 1/4 pi epsilon 0 P upon R cube. Since R is greater than L, L square neglected. This is the electric field in equatorial point. यहाँ पर this electric field is parallel to axis AB but opposite to P. P
नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ है, अब बट दिस इज अपोजिट टू P। जो पहले हम लोगों ने निकाला था एक्सेल पॉइंट पर, उसमें पैरेलल तो था ही, वो उसी पैरेलल था एक्सिस एज वेल एज इन द सेम डायरेक्शन एज P। यहाँ पर P के ये अपोजिट होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, बट we know that only on the axial point or only on the equatorial point we have calculated the electric field. But suppose the point is here, what will be the electric field on any point? Electric field on any point P. This is the dipole. This is the dipole. This is negative, this is positive. And this is the direction of the P. This is P. Suppose the point is here, P. Now this is the line joining this center of this dipole. This is the dipole. This is center of the dipole, say O. This is point P where we want to find out the electric field. Now we can resolve this P, the vector quantity, into two. One is in this direction. This is P cos theta. This is theta. The direction between the P of the dipole, and this is the component of the dipole moment, P cos theta. P cos theta is component along R of dipole moment. along R, ये R है, and other is like this. ये दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये है, और ये है P sin थीटा. P sin थीटा is component of dipole moment perpendicular to
आर, जो ये आर है, इस आर के ये डायरेक्शन में है, ये उसके परपेंडिकुलर है। यानी दिस पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस पी साइन थीटा एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस पी कास थीटा। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पर हमने निकाल रखा है। एंड देयरफॉर पी कास थीटा के कारण और पी साइन थीटा के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कास थीटा एट पी। पी क्या है, इसको यम मान लें, यम मान लेते हैं, यम पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए एट यम इज E1। दिस इज 1/4πε0। एक्सियल पॉइंट पर निकालने के लिए हमें याद है, हम लोगों ने निकाला था 1/4πε0 2p/r³। यानी जो मोमेंट है डायपोल मोमेंट का 2, डायपोल मोमेंट है इधर p cos थीटा इन दिस डायरेक्शन, इसलिए हुआ 2p cos थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r², r³। 2p cos theta upon r³ and due to p sin theta, the field due to p sin theta at m is E2 1/4πε0। जितनी इसकी वैल्यू है उसमें दो नहीं रहता, पी साइन थीटा अपॉन r³ एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट, इसके कारण से जो है ये इस दिशा में है। दिस इज E1 एंड दिस इज E2। Both are perpendicular to each other. E1 or E2 are perpendicular to each other. E1 and E2 are perpendicular, and therefore E is equal to under root E1 square plus E2 square वन अपॉन 4πε0 p अपॉन r³, 1/4πε0 r³ p upon r³ is here. Square, and here is 4 cos square theta and p here sin square theta. स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये आएगा 1/4πε0 p upon r³ and this is under root, this is 4 cos square theta is 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta, and therefore E is equal to 1/4πε0 p
P upon R cube under root 3 cos square theta plus 1. This is the electric field. Due to this at any point due to a dipole, and this is resultant E. Suppose this is angle alpha, then we can find out alpha. From figure, tan alpha is equal to vertical component upon the horizontal component, that is E2 upon E1. E2 upon E1, 1 upon 4 pi epsilon 0 E2 upon E1. This is equal to E2 1 upon 4 pi epsilon 0 P sin theta upon R cube 1 upon 4 pi epsilon 0 2p cos theta upon R cube. This is equal to 1 by 2 tan theta. This is the direction of the resultant E. Direction of the resultant. Direction of resultant E. So this is the electric field due to the dipole. In 3 stages, one on the axial point, other on the equatorial point, or any other point, anywhere in the field, electric field. वीडियो आपने देखा होगा, आपको इसे आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।